Yeah, good evening. Just a moment, let me just open the chat. Yeah, Prikshit, Rimsha, Ditya, Astha, Vijay, good evening. Good evening, bache. Welcome to the live session on Osteology of Ulna, Part 2. Yes. So today I will be discussing Part 2. Yeah, Vipin, good evening. Good evening. Just waiting for one more minute. Let others join and then I'll start with the class. I hope the audio visuals are perfectly fine. Just give me a thumbs up that everything is like perfect. Like from my end, everything is good. Yeah, Arvind, welcome to the class. Pavan, good evening, beta. Good evening. Good evening. Yes. Kapil, Nesi, good evening, beta. Welcome to the class. Osama, good evening. So today I will be discussing the osteology of the ulna, part 2. And I will be talking some connections also between the radius and the ulna in this particular lecture. Okay. So yeah, Fatima is also here. Okay, bacha. Naresh, good evening. Welcome to the class. Vijay, welcome to the class, beta. Welcome to the class. Sure. Let's start with the class, guys. I hope everyone is ready. Kapil, hello. So I hope everyone is ready with their notes, with full energy. Yes, perfect. Perfect, bacha. Sure. So today I will be discussing the parts, okay? The parts of the ulna. The lower end and the shaft is left. The lower end and the shaft region is left. Muscle attachments, okay? Origin and insertion, ossification centers of ulna, and the one more thing that I will be discussing, it is the structures. Yes. ओके करणवीर 2 मिनट 2 मिनट में तो यार मैगी भी तैयार हो जाती है ना आजकल तो. स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू radius and ulna. So let us now start with the parts of the ulna, and now I will be focusing on the lower end of the ulna. So remember, the first I will discuss the lower end and then I will move to the shaft region. Okay, first I will नहीं बच्चे अल्नार ट्यूबरोसिटी मैंने उसी में लिखवा दिया था अपर एंड में ही जब मैं प्रोसेस की बात कर रहा था तो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द अल्नार ट्यूबरोसिटी और यहाँ पर एक मसल की इंसर्शन होती है ठीक है वो भी मैंने आप लोग को बता दी थी दैट इज द ब्रेकियालिस मसल रिमशा yes I have discussed that. So today I will be focusing on the lower end of the ulna, and remember that about the lower end, guys, about the lower end, if you just see over here, the lower end is perfectly small as compared to the upper end. Upper end is large. Upper end तो large है, but when I compare it with the lower end, it is smaller as compared to the upper end. Okay, it is smaller as compared to the upper end. So remember, it is smaller than the upper end. It is smaller than the upper end. And formed of head and styloid process. Formed of head and styloid process. Okay, so remember we have two parts of the lower end, that is the head and styloid process. One major thing that guys you should notice over here कि lower end. Shakib beta, good evening, welcome to the lecture. Good evening beta, welcome. तो lower end पर यहाँ पर तुम्हें head देखने को मिलता है. This is the part where you will find the head of the ulna. Usually क्या होता है कि जो भी बोन पढ़ते हैं उसके अपर एंड पर हमें हेड देखने को मिलता है,
But ulna over here is an exception. Okay, the head is basically located on the lower end of the ulna. Okay, the head is located on the lower end of the ulna, the only bone in the upper limb where the head is located downwards. Okay, so remember, whenever we are talking about the head part, it is rounded. It is rounded. And remember, if this is the medial side and this is the lateral side, head is diverted more towards the lateral side. Head is diverted more towards the lateral side. Okay, and remember, it is directed laterally. It is directed laterally. Amanat, bache, good evening. Welcome to the class. Good evening. It is rounded. It is directed laterally. लेटरली कहने का मतलब है ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर हो गया, ठीक है, और हेड जो है लेटरल की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, लेटरल साइड. ओके, डायरेक्टेड लेटरली. एंड रिमेंबर, इट कैन बी फेल्ट सबक्यूटेनियसली. एंड इट कैन बी फेल्ट सबक्यूटेनियसली. कहने का मतलब है कि what do you mean by subcutaneously? Basically under the skin. Okay, under the skin. Cutaneous का मतलब क्या होता है? Skin. और sub का मतलब just below it. So it is present just below the skin. You can feel it. Okay, you can feel the head of the ulna. And in which okay, my question to you guys is, Dvijansh, good evening beta. My question to you guys is, in which movement, supination or pronation, okay, you will feel the head subcutaneously? That's a question for you guys. In which movement you will be able to feel the head of the ulna subcutaneously, whether it is supination or pronation? I'm waiting for your answers. Meanwhile, I will just complete the rest points. Remember, the lateral surface. Good evening, Satish. I just left it. Okay. So the lateral surface is separated from the carpal bones. Supination, arbas. Arbas is supination. नहीं बेटा, arbas it is the pronation movement. Karanveer, Rimsha नहीं. Rimsha supination नहीं है बेटा. Pronation movement में you will be able to feel. Okay. इस तरीके से hand है. You are just coming in like this. You will be able to feel the head of the ulna. Okay. It is the pronation movement beta. Yes, it is the pronation movement. Yes, Rimsha, Naresh, very good. नहीं, रिमशा नहीं, तुम अभी गलत. नरेश ठीक ठीक. प्रोनेशन मूवमेंट में या प्रेक्षित, वेरी गुड. प्रोनेशन होगा बेटा. सो रिमेंबर, द लेटरल सरफेस, जो ये वाला जो सरफेस है, ओके, इट इज, or I'll just try to draw it like this. You can see the lateral surface over here. Okay, the lateral surface, you can very well see that it is basically separated from the carpal disc by a triangular articular disc. Okay, yeah, Shivani Gaur, pronation. Okay beta. So remember, it is separated from the carpal bones. मुझे एक चीज जाननी है, अल्ना पार्टिसिपेट करता है रिस्ट जॉइंट बनाने में या नहीं? I want your answers, guys. Does ulna participate in the formation of a like wrist joint or not? Wrist joint का दूसरा नाम भी बता देना क्या होता है. Okay, carpal bone by a triangular articular disc. Triangular articular disc. Yes, Prikshit, Rimsha, Arbaz, perfect beta, perfect. Arvind, perfect. And yes. और हाँ, सब ठीक है. Yes, पवन, okay. अमानत, okay. सब कुछ ठीक है. Just one more thing, guys, that you can see. इस head के साथ you will be able to find the
styloid process. Okay, styloid process. Okay. Radiocarpal joint. Very good. Very good, Prakshit. Very good. Radiocarpal joint. Yeah, it's a type of an ellipsoid joint. Very good, Arbas. Perfect. Perfect. So you can very well see, yeah, over here कि अगर दूसरे पार्ट की बात करें, हेड की बात हो गई, और स्टाइलॉइड प्रोसेस की अगर बात करें, स्टाइलॉइड प्रोसेस, रिमेंबर it projects downwards. It projects downwards from the posteromedial part of the head. Posteromedial part of the head. Now guys, remember कि ये जो स्टेलॉइड प्रोसेस है ये पीछे की तरफ लोकेटेड है और ये मीडियल साइड पे लोकेटेड है. देखो मीडियल ये हो क्या, लेटरल ये हो क्या, तो स्टेलॉइड प्रोसेस इज लोकेटेड ऑन द मीडियल साइड एंड ऑन द पोस्टीरियर साइड. सो द एग्जैक्ट लोकेशन इट इज द पोस्टीरोमीडियल पार्ट ऑफ द हेड. ये हेड है और हेड से जस्ट पीछे और मीडियल साइड की तरफ यू विल फाइंड द स्टाइलॉइड प्रोसेस. You will find the styloid process, and remember it can be felt subcutaneously in one of the movements. Now I want you to answer me in which movement, supination या pronation में तुम्हें styloid process feel होगा subcutaneously. It can be felt subcutaneously in dash position. In dash position. Yes, I'm waiting for your answers, everyone. चल, perfect. तो that was about the lower end. Very clear. सिर्फ head और styloid process. Head सर lateral side पे होता है, ठीक है, round projection है, और pronation में subcutaneously felt हो सकता है, and it is separated from the carpal bones by a triangular articular disc. Pronation, Albas, pronation, okay, pronation, pronation, नहीं, it is felt in the supination position. बेटा गलत, इसको अभी याद करेंगे. supination position में अभी muscles करेंगे ना हम लोग, इसके बाद जब muscles करेंगे तब हम लोग movements के साथ देखेंगे कहाँ पे कौन सी which muscles are pronators, supinators कौन सी है, and yeah, नहीं, supination है बेटा. Yes, write it down. मतलब तुम लोग ना वो हो गए कि हाँ सर ने पहले का तो ऐसे बोला था, अब वही बोल के देखते हैं, तो नहीं. supination ही होगा. more prominent अरबाज supination position में देखने को मिलता है, more prominent. Now guys, coming on to the shaft of the ulna. Coming on to the shaft of the ulna. Shaft of the ulna, and remember the ulnar shaft is divided into 3 borders and 3 surfaces. 3 borders and 3 surfaces. Remember that the shaft region of the ulna is thick above. It is thick above, but it tapers towards the lower end. Okay, but it tapers towards the lower end. ऊपर बहुत ज़्यादा चौड़ा देखने को मिलेगा और नीचे आते आते basically it will end in a narrow covering or tapering. Okay, it tapers towards the lower end, guys. And remember that the shaft, basically upper 3/4, is triangular in cross section. It is triangular in cross section. Upper 3/4 is triangular in cross section.
हाँ, सो यस, हाथ पे अभी आएगा नहीं कैमरे पे, आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू आफ्टर सम टाइम, ओके। तो खुद ही देखो ना, सुपिनेशन करो अरबाज एक बार। सुपिनेशन और प्रोनेशन क्या मूवमेंट्स होती है, पहले तो यही बता दो मुझे क्या होता है। और सुपिनेटेड पोजीशन में अगर हाथ को रखोगे, ठीक है, यू विल बी मोर एबल टू फील द स्टाइलॉइड प्रोसेस। सुपिनेशन में ये देखो, ये जो प्रोजेक्शन निकली हुई आ रही है ना, दैट इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये सुपिनेशन हो गई ना, ओके। सो यस, yes, now guys, coming on to the borders first. And borders are further divided into three main parts, okay. Borders are further divided into three main parts, okay. We have three borders, that is the interosseous border, then we have anterior border, and we have posterior border. So we have three borders: interosseous border, anterior border, and the posterior border. So let us now understand each border, okay. Interosseous beta, ये border कहाँ पर present होगी? Can anyone tell me where this border will be present? Between okay, interosseous border will be on which side? Lateral side, medial side, which bones, okay. And inter basically means two. So which two structures will be there जिसमें बीच में ये border देखने को मिल रहा है, interosseous membrane देखने को मिलती है. So there are some two structures also. Can anyone tell me? Yes, can anyone tell me? हाँ, लेटरल साइड पे, ठीक है. तो यस, अगर ये इंटीरियर व्यू देख रहे हो तो यू विल बी मोर एबल टू फाइंड दिस पर्टिकुलर बॉर्डर ओवर हियर, ओके. दैट इज द इंटरऑशियस बॉर्डर. Yes, yes, Vipin, very good beta, very good Vipin. It is the radius and the ulna. Yeah, it is the radius and the ulna. Yes. So remember, the interosseous border is basically sharp, okay. It is sharp and it is directed laterally. All out. It is directed laterally. Yeah, Prakshit, it is right. It is radius and ulna. Yeah, syndesmosis. Okay. रेडियस और अल्ना का तो क्वेश्चन नहीं था ना इस पर, तो अभी स्ट्रक्चर्स भी देख लेंगे कि कौन कौन से कनेक्ट करते हैं. सो रिमेंबर दैट दिस इज द बॉर्डर विच विल गिव अटैचमेंट टू द इंटरऑशियस मेम्ब्रेन, ओके. इट गिव्स अटैचमेंट टू द इंटरऑशियस मेम्ब्रेन and the upper end of the border is basically continuous with the supinator crest. You can see the supinator crest and fossa, okay. You can see the supinator crest. I have discussed this yesterday also, and this particular structure is basically continuous with the interosseous border also. So the upper end of this particular border is, yeah, lateral side of the head. very good दित्या, very good. आंसर्स नहीं आ रहे भाई, क्या बात है, तुम लोग आंसर्स वगैरह देते रहो. upper end is continuous with the supinator crest, so yes. Now guys, I will try to show a picture over here, okay. Now can anyone identify कि ये कौन सी membrane है और इस membrane का direction इस तरीके से देखने को मिल रहा है. Can anyone tell me कि which membrane is this? Yes, can anyone tell me which particular membrane is this?
Meanwhile, I'll just show you one more picture over here. So this is the posterior aspect of the posterior view, okay, the posterior view of the ulna, and you can see that interosseous border will be over here, okay, the interosseous border will be over here. So see, it is thick above but tapering at the lower end. It is tapering at the lower end. So you can very well see. Yes, yes, विपिन अरबाज वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. बाकियों को क्या हो गया पता नहीं, आंसर्स ही नहीं आते हैं. तो इट्स वेरी गुड. It is the interosseous membrane, guys. It is the interosseous membrane that is arising from the interosseous border of the ulna. It is arising from the interosseous border of the ulna. So it is the interosseous membrane, guys. It is the interosseous membrane. Yes. Kapil, Shivani, good beta. So it is the interosseous membrane. So we have discussed about the interosseous border. Now coming on to the anterior border. Anterior border, guys, remember कि anterior border, it is over here. It is over here. Anterior border is basically, I will write it over here. Write down anterior border. Interosseous है Pavan, very good beta. So now write down that anterior border remember it is rounded, and it starts above the lower end of the medial border, lower end of the medial border of the coronoid process. Coronoid process किस joint में help करती है? Okay, coronoid process helps in formation of which particular joint and in which particular anatomical movement. I want the answers in the chat box, guys. I've already discussed this particular point in my previous lecture. Okay, so remember it is starting with the medial border of the coronoid process, and it is going just down like this. Okay. So yes, I'm waiting for your answers, everyone. And remember, this is something which will end below the base of the styloid process. So remember that the anterior border, it basically ends below at the base of styloid process. Base of styloid process. क्या हो गया, आंसर्स नहीं आ रहे हैं? चलो, यस, फ्लेक्शन मूवमेंट, एल्बो जॉइंट, ठीक है, एल्बो में भी बहुत से जॉइंट्स हो गए ना, तो उसका भी बताना पड़ेगा. एल्बो जॉइंट अच्छा चलो, मैं जॉइंट का नाम पूछा था, मुझे बोन्स तो बताओ. It is about the anterior border, and now in the posterior view you will be able to find the posterior border. You can see, हाँ, फ्लेक्शन में तो होगा, ठीक है रिमशा, बट वो जॉइंट का थोड़ा सा और एलाबरेट कर देते उसको. So you can see the posterior border, and remember it is prominent. Write down about the posterior border, and remember, coronoid process attached to the coronoid fossa. Okay, humerus plus ulna, radius, ना शिवानी, radius नहीं है बेटा, radius नहीं. It is the coronoid fossa. Coronoid fossa present in which particular bone structure? Posterior border, it is prominent. It is
prominent and starts above at the apex of the posterior surface of the olecranon process. Okay, it starts at the, ये जो olecranon process है, इसकी जो apex है, it is starting from this particular apex, that is the posterior border, guys. Yeah, so it starts above at the apex of the posterior surface of the olecranon process. Okay, so yeah, you just have to remember this particular point regarding the border, posterior border. I hope all the three borders are done, guys. All the three borders, anterior, interosseous and posterior border, done. So just give me a thumbs up, guys, that you already have written this particular notes or noted down in your registers, so that I can continue with the surfaces of the ulnar bone. Okay, I'll continue with the surfaces of the ulnar bone. Okay, before that, if you want, okay, I'll discuss the muscles there and then. Okay, after the surfaces, I'll discuss the muscles also. Okay, Prakshit, okay, perfect. Arvind, perfect, बेटा. बाकी सब थोड़ी सी फुर्ती ले आओ. विपिन, रिमशा, नेजी, perfect. कपिल, okay, बढ़िया, first class. Now we have three surfaces. Yes, Ditya, very good, beta. Now we have three surfaces, guys. You already know that we have the anterior surface, the medial surface, and the posterior surface. Now you guys are going to answer me the surfaces. So tell me, the anterior surface will be present between two borders. Name those two borders, guys. In the chat box, फटाफट से fastest finger typing जो कर सकता है. I want the answers. Yeah. हाँ दित्या, ये तो ठीक है. Anterior, medial and posterior surface. Now I'm asking the locations also. And just tell me. Yeah, just tell me the anterior surface, it is between which two borders? Between dash, okay, and dash border. The very first point about the anterior surface, okay. And you can see clearly over here. A nutrient foramen is seen. Okay, a nutrient foramen is seen. Yes, perfect Ditya. It is the anterior and the interosseous border. बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था. Yeah, it is the nutrient foramen. So yes, it is the anterior. हाँ, Arvind, very good. And the interosseous border. मैंने तो मार्क भी कर दिया था. Anterior and the interosseous border, and remember its upper 1/3 part of this surface basically, हाँ ठीक है. रिमशा, प्रेक्षित, अरबाज, फातिमा, very good बेटा. It presents a nutrient foramen, and remember the direction of the nutrient foramen will be towards the elbow joint. Okay, the direction of the nutrient foramen, it will be towards the elbow joint. It is directed towards the elbow. So its upper 1/3, basically it presents a nutrient foramen. You will find on this particular surface, that is the upper 1/3 surface, and the direction of the nutrient foramen is basically upwards towards the elbow joint.
towards the elbow joint. Yes, Pavan, Nesi, very good. Pavan, Nesi, very good. Apart from that, guys, remember whenever we talk about the medial surface, now guys tell me where will be the medial surface present. The location between which two borders you will find the medial surface, between dash and dash borders. And apparently I will just write one more point that it is smooth. It is smooth. चलो फटाफट से इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो. इट इज प्रेजेंट बिटवीन विच टू पर्टिकुलर बॉर्डर्स. इट इज प्रेजेंट बिटवीन विच टू पर्टिकुलर बॉर्डर्स. या it is present between which two particular borders. Yeah, Rimsha, perfect beta. It is present between the anterior and the posterior borders. It is present between the anterior and the posterior borders. You will be able to see it over here in the posterior section much clearly that जो posterior border है और ये वाला जो surface आपको देखने को मिल रहा है between the posterior border and the anterior border, you will be able to see the medial surface. You will be able to see the medial surface and it is very smooth kind of a surface. Yes, Ditya, Vipin, Arvind, Karanveer, very good. Yes, perfect, perfect. Coming on to the next part. Okay, coming on to the next part. That is the posterior surface. And tell me the location of the posterior surface now, guys. Tell me the location of the posterior surface. Yes, it is present between the dash and dash borders. I'm waiting for your answers. Yeah. It is present between the dash and dash borders. Chalo, I'm waiting for your answers, everyone. Between the posterior and interosseous borders. Okay, Rimsha, perfect, perfect. नहीं, हाँ ठीक है, between the posterior and the interosseous borders. नेजी नहीं बेटा, anterior और posterior नहीं है. So you can very well see over here बेटा कि ये posterior border है, ठीक है, और ये इंटरऑशियस बॉर्डर है. तो इन दोनों के जो बीच में सरफेस देखने को मिलेगा दैट विल बी योर पोस्टीरियर सरफेस. दैट विल बी योर पोस्टीरियर सरफेस बिटवीन द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द इंटरऑशियस बॉर्डर एंड दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस. दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस. सो यस, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस. दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस. Now guys, coming on to some very important structures that three muscles basically. Now कुछ muscle attachments भी पढ़ लेते हैं और posterior border पे ही mention करना कि posterior border पर तुम्हें तीन muscles देखने को मिलती हैं. Posterior border पर basically three muscles you will find. Okay, and remember the muscles are flexor, carpi, ulnaris. That is also called as the ulnar head. Means the ulnar head of this particular muscle will arise from this particular border. Okay, and remember the second one, it is the extensor carpi ulnaris. Extensor carpi ulnaris. देखो नाम से ही पता चल जाता है ना, फ्लेक्शन में हेल्प करेगा, एक्सटेंशन में हेल्प करेगा. तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन जनरल एनाटॉमी कि फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है. ओके, एंड one more, it is the flexor digitorum profundus. Flexor digitorum profundus. Okay, it is the flexion digitorum profundus. Yeah, it is the flexor digitorum profundus. So yes, and that too in order you will find they arise from a common epineurosis. So you can see the posterior border over here, and yeah, you can see the posterior border over here, yeah, on the posterior surface, and you can see this is the muscle which will be arising from these posterior surfaces. Okay, these posterior surfaces, and yeah,
basically they are arising as like common aponeurosis. Now, can anyone tell me what do you mean by the term aponeurosis? I have already discussed. What do you mean by the term aponeurosis? Yes. So just tell me the answers in the chat box. What do you mean by the term aponeurosis? And remember, write down the origin over here only, that ulnar aponeurosis basically gives origin to three particular muscles, and the name you have already written: flexor carpi ulnaris, extensor carpi ulnaris, and flexor digitorum profundus. Yes, so basically these are the muscles which you will find prominent on like they will arise or they will be originating from the posterior border of the ulna. Yeah, they will be arising from the posterior border of the ulna. Okay. Yes. Perfect. Perfect. अब ठीक है, अरबाज उसामा दित्या प्रेक्षित perfect बेटा. Apart from that guys, if I just want to talk about the posterior surface, तो posterior border और interosseous border के बीच में जो area होता है, that is the posterior surface. You will be able to find the posterior surface which I am highlighting with the blue color. And remember कि posterior surface पे आपको तीन muscles देखने को मिलेंगी. Okay, posterior surface पे आपको तीन muscles देखने को मिलेंगी. Yeah, it is a flattened tendon, Nazi, very good. Okay, so yeah, three muscles will originate. So write down the name of the muscles over here. Yeah, the name of the muscles. So yeah, the very first muscle that you will see on the posterior surface, so it is the Abductor Pollicis longus. Abductor Pollicis longus. Then we have extensor pollicis longus, extensor pollicis longus, and one more thing, that we have external indicis muscle. Okay, we have the external indicis muscle, और ये ऑर्डर में है बेटा, ये ऑर्डर में है, इसको इसी तरीके से याद करना है. एक्सटेंसर इंडिसिस मसल. ओके, सो रिमेंबर वी हैव थ्री मसल्स दैट आर बेसिकली प्रेजेंट ऑन द that are present, okay, or they are originating from the posterior surface. So I will write this also so that you don't forget. Basically from the posterior surface you will have three muscles which will be originating. Okay, so write down, it is the Abductor Pollicis longus, Abductor Pollicis longus, Extensor Pollicis longus, Extensor Pollicis longus, and Extensor indicis, Extensor indicis. Basically they arise in order, and remember basically from above downwards, and okay, it is majorly from the upper two-third of the posterior surface. Upper two-third of the posterior surface. Upper two-third of the posterior surface. So अगर हम posterior view देखने की कोशिश करें तो you can very well see कि ये posterior border है. Suppose if this is the posterior border, तो ये और ये A और B कौन से borders होंगे? Just let me know.
if this is the posterior border, what will be A and B? Okay, what will be A and B? I just want your answers. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि सर ये तीन मसल्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, या और ये तीन मसल्स कुछ इस तरीके से ऑरिजिनेट करती हुई नजर आएंगी यहाँ से, ठीक है। सो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडिसिस, extensor indicis. So meanwhile I'm drinking the water, I'm waiting for your answers everyone. बॉर्डर का नाम बताना है, लिटरल बॉर्डर नहीं बोलेंगे, बॉर्डर का नाम बताना है रिमशा, बॉर्डर का नाम। बाकी भी आंसर्स कर दो यार, अगर इफ यू नो द आंसर्स जस्ट लेट मी नो। या Karanveer says A is anterior border. Okay. A is the anterior border. Okay. And B is the interosseous border. और posterior border पर भी तीन मसल्स देखने को मिल रही थी ना, posterior border पर भी तीन मसल्स देखने को मिल रही थी। तो ये ऑर्डर अच्छे से याद रखना, एक छोटा सा डायग्राम बना लेना साथ में ना, तुम लोग को याद रहेगा, एक छोटा सा डायग्राम बना के रखना सो दैट यू डोंट फॉरगेट, सो दैट यू डोंट फॉरगेट। नाउ गाइस कमिंग ऑन टू एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ओके, कि एंटीरियर सरफेस पे बेसिकली टू मसल्स आर अटैच्ड टू the anterior and the medial surface, anterior and medial surfaces. Two muscles are attached to the anterior and the medial surfaces. Remember, we have flexor digitorum profundus, flexor digitorum profundus, and along with that we have Pronator Quadratus, Pronator Quadratus, Pronator Quadratus. Now remember guys, flexor digitorum profundus, basically they arise from upper 3/4 of anterior and medial surfaces, anterior and medial surfaces, okay, and pronator quadratus, it is just below this, so it will arise from, okay, it will arise from lower 1/4 of the anterior surface of the ulna, anterior surface of the ulna. It will arise from the lower 1/4 of the anterior surface of the ulna. So if you want that I should tell you, it will be somewhat like over here, okay, it will be somewhat like over here, yeah. So you can see this is the anterior surface, और थोड़ा सा पीछे की तरफ that you will find on the medial surface as well, पीछे की तरफ होगा थोड़ा सा, क्योंकि anterior view में दिखा रहा हूँ, and this is flexor digitorum profundus arising from the 3/4 of the anteromedial surface, and remember beyond that on the lower 1/4 part, on the lower 1/4 part, on the lower 1/4 part you will find the pronator quadratus muscle. So ये 3/4 हो गया, ये 1/4 हो गया. So yes,
this is present on the anterior as well as on the medial surface. Okay, so it is just extended to the medial surface as well. So that was about the muscles which are attached. Okay, posterior surface, posterior border, anterior and medial surfaces done. तो इतना ही आपको पता करना है कि एंटीरियर और मीडियल सरफेस पे फ्लेक्सर, डिजिटोरम, प्रोफंडस, थोड़ा टाइम लगता है याद करने में, प्रोनेटर क्वाड्राटस, बट मैंने एज यूजुअल बताया कि जैसे ही कल रेडियस खत्म करूंगा तो उसके बाद मसल्स का टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मसल्स दोबारा से एक एक मसल देखेंगे, एक एक मूवमेंट देखेंगे मसल की, कहाँ से आ रही है, कहाँ पे इंसर्ट कर रही है, तो मसल्स वाली टॉपिक तो बिल्कुल मिस मत करना। और उसके बाद जब नर्व सप्लाई देखोगे तो उसमें भी एक बार मसल्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अभी सिर्फ बोन्स के साथ याद करो कि ये पार्ट्स है और इन पार्ट्स पे ये मसल हमें देखने को मिलती है। जस्ट यू लर्न द नेम ऑफ द पार्ट एंड द मसल विच इज अटैच्ड ओवर देयर, दैट्स इट। So yes, I hope this is clear to each and everyone. Just give me a thumbs up guys so that I can no yeah just give me a thumbs up so that I can talk about the ossification centers of the ulna. I can talk about the ossification centers of the ulna. Yeah, yes, Prikshit, very good. Rimsha, very good. Perfect beta, perfect. Yeah, चलो, वेरी गुड। फातिमा, विपिन, वेरी गुड गाइस, परफेक्ट। ओसामा, वेरी गुड। सो राइट डाउन द हेडिंग एज ऑसिफिकेशन सेंटर्स ऑफ द अल्ना। मसल का ऑरिजिन और इंसर्शन आप लोग एक आज खुद ट्राई करिए कि कौन सी ऑरिजिनेट कर रही है, कौन सी इंसर्ट करिए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा विच इज द ऑरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ मसल्स। दैट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑफ 2 minutes, बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट ट्राई योरसेल्फ ऑल्सो। Okay, so I will be recording that video tomorrow morning and I will be releasing it tomorrow only, but before that just try to complete it in your notes as well. I have already mentioned तो एक ट्रिक के साथ मैं कल it will be like uploaded on my YouTube channel. Okay, so don't worry about that also. So ossification centers of ulna, I hope you all are preparing the notebook and writing the notes. Ossification centers of the ulna, remember that it ossifies in the cartilage. It ossifies in cartilage, and you already know that it is the N-Chondral Ossification. It is the N-Chondral Ossification. N-Chondral Ossification, and remember that it is from 3 centers. It is from 3 centers. One primary center that you will find in the shaft region. Okay, one primary center, and it is present in the shaft. And remember it appears in its like around the appears around or at 8th week of intrauterine life. It appears at 8th week of intrauterine life. Now coming on to 2 secondary centers. Remember, one secondary center that is situated at the lower end, okay, and it appears in the 6th year. Okay, it appears in the 6th year of life. Okay, so remember, it appears in the 6th year of life. And one secondary center, basically it is situated at the upper end, that is the olecranon part. Okay, most commonly it is the olecranon only. Okay, upper end में ही है, और most commonly it is the olecranon part. Okay,
So, and it is around the ninth year. कुछ बुक्स में 10th भी है, कुछ बुक्स में 10th भी है. I'll go with 9th. Okay. This is about the ossification centers of ulna. 3 centers. 1 primary center, 8th week of intrauterine life. 8th week of intrauterine life. Okay. 2 secondary centers. One basically at the lower end, which is around like 6th year, and one at around 9th or 10th year. I'll go with 9th. Okay. And it is mostly like the olecranon one, where it was just present. Yeah. I hope this is done, guys. I hope this is done. Just give me a thumbs up that ossification centers of ulna done. Just give me a thumbs up that ossification centers of ulna done. Sure, perfect, perfect, guys, perfect. Now I have to discuss something very important, that is the structures. Yes, very good. Prikshit, अरबाज, विपिन, बाकी सब आंसर्स भी दे दिया करो, थम्स अप तो दे ही दिया करो कम से कम, कि पता चले कि जिंदा हो क्लास में. मतलब ये तो चलो लाइव सेशन है, इसमें तो पता नहीं चलता तुम लोग अदर एंड पे क्या कर रहे हो. तो अगर ऐसा कुछ हो जाता कि मुझे पता चल जाता कि व्हाट यू आर डूइंग और इफ आई कैन सी यू, तो कुछ बात ही और थी. फिर तो तुम्हारे सारे राज खुल जाते, पूरा लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती यूट्यूब पे. एनीवेज, तो स्ट्रक्चर्स कनेक्टिंग रेडियस एंड अल्ना. रेडियस एंड अल्ना. So you can very well see this is the ulna bone. चलो, very good. विपिन, रिमशा, अरविंद, पवन, नेसी, perfect, perfect बेटा. और this is the radius bone. This is the radius bone. और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ ऐसे structures हैं which are connecting both the bones. Which are connecting both the bones. The radius and the ulna. फातिमा, very good बेटा, very good. Which are connecting both the bones. The very first thing, देखो बाद में लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं होता. जो कहते हैं कि बाद में देखेंगे, तो लाइव सेशन का मतलब ही क्या, मैं तो रिकॉर्ड करके भी डाल सकता था. लाइव सेशन में 10 चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने दिमाग पे जोर डालते हो और फिर सोचते हो कि आपने क्या पढ़ा है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो चीज़ रिकॉर्डेड लेक्चर्स में नहीं हो, तो वैसे दुनिया भर के आप पढ़ने के लिए पढ़ लो, कहीं से गूगल पे भी लिखा हुआ है, गूगल से पढ़ लो. तो सिंपल सी बात है, जब लाइव लेक्चर में बैठते हो और तब योर अटेंशन, योर आंसरिंग सेशन आपको रिटेन करने में हेल्प करता है. जो बाद में आप लोग दुनिया भर के वीडियोस देखते रहो, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का. तो जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे. जिस दिन पार्टिसिपेशन बंद हो जाएगा, यू गाइस विल रियलाइज कि फिर तो फायदा ही नहीं है. फिर तो गूगल पे तो यही नोट्स हैं, बुक्स में भी यही लिखा हुआ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ. मैं तो कुछ अलग से बता नहीं रहा. बुक में जो लिखा है वही हम लोग पढ़ रहे हैं, वही नोट्स हैं. गूगल पे भी वही है, सब जगह वही है. तो इट्स बेटर कि यू हैव टू पार्टिसिपेट गाइस. तो रिमेंबर द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर. तो हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, दैट इज द स्ट्रक्चर. दैट इज द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बाद हम लोग लिखेंगे अटैचमेंट टू द रेडियस. अटैचमेंट टू द रेडियस. And after that, attachment to the ulna. After that, attachment to the ulna. Yes. तो सबसे पहला जो आप लोग को देखने को मिलता है, that is the annular ligament. Okay. So the very first structure that will connect the radius and ulna, it is the annular ligament. Annular ligament. And remember, ये जो annular ligament है, annular ligament, remember, it is surrounding the head of the radius. Okay, it surrounds
अब हम रेडियस बोन पे देख रहे हैं, रेडियस के हेड को पूरे तरीके से कवर कर रहा है. सो इट इज सराउंडिंग द हेड and loosely attached to the neck of the radius and loosely attached to the neck of the radius. Now remember guys, over here you will find on the ulna side you will find the radial notch. Okay, this structure, that is the radial notch. So it is attached to the radial notch also. Okay, so it is the radial notch. Okay, now can anyone tell me the name of the joint over here? Can anyone tell me the name of the joint over here? Which joint is this? Can anyone tell me the name of the joint over here? Which joint is this? Meanwhile, I will complete the statement that on ulna it is attached to the anterior and posterior borders of the radial notch. Yes, I'm waiting for your answers everyone. Superior radioulnar joint, Karanveer, yes, यही perfect answer मुझे ना चाहिए होते हैं. Yes, it is the superior radioulnar joint. Perfect. It is the superior radioulnar joint. Perfect Ditya, Prakshit, Vipin, yes, perfect beta. Second structure, write down the second structure. It is the quadrate ligament. And remember, the quadrate ligament, basically this is the neck of the radius. Okay, and the quadrate ligament is basically attached to the medial side of the neck of the radius. Okay, it is attached to the medial side of the neck of the radius, and it is just attached below the radial notch. Okay, it is just below the radial notch. This is the attachment, guys. This is the attachment. It is just attached below the radial notch. Yes, perfect. Coming on to the third point, that is the oblique chord. Very important. ये वाला जो chord आपको देखने को मिल रहा है, this chord is called as the oblique chord. तो ये है आपका oblique chord. Okay, oblique chord. Remember that oblique chord, देखो ये ना रेडियल ट्यूब्रोसिटी होती है. जब रेडियस बोन पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा रेडियल ट्यूब्रोसिटी के जस्ट नीचे अटैच कर रहा है oblique chord. तो रेडियल ट्यूब्रोसिटी जो है उसके जस्ट नीचे you will find the oblique chord. So write down oblique chord, and remember it is attached just below the radial tuberosity. Okay, and remember it is attached to
the lateral side of ulnar tuberosity. ये ulnar tuberosity है, ठीक है, ulnar tuberosity के lateral side पर attachment देखने को मिल रही है. तो yes, it is attached to the lateral side of the ulnar tuberosity just below the quadrate ligament. Just below the quadrate ligament. Just below the quadrate ligament. Coming on to the next point. Interosseous membrane. Interosseous membrane. Remember, it is attached to the interosseous border of the radius. So this membrane we are talking about. We are talking about this particular membrane, and you can all see the direction of the fibers over here. The direction of the fibers. Okay. So it is attached to the interosseous border of the radius. Interosseous border of the radius. And it is attached to the interosseous border of the ulna. Interosseous border of the ulna. It is attached to the interosseous border of the ulna. Now guys, remember one thing very clearly कि दोनों oblique chord में और जो ये interosseous membrane है, दोनों में डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स आर अपोजिट. एक का डायरेक्शन इस तरफ है, एक का डायरेक्शन इस तरफ है. सो डायरेक्शन ऑफ द फाइबर्स आर perfectly opposite guys in both the structures. Okay, one more thing that I want to mention over here कि yeah, one more thing that I want to mention over here. Over here you will find an artery in between. इन दोनों oblique chord और interosseous chord के बीच में एक artery पीछे से निकलकर आगे की तरफ आ रही है. That is called as the posterior interosseous artery. ये लिख लो structure, बहुत important है. It is the posterior interosseous artery. अभी सिंपली ये लिख लो, ये आर्टरी पीछे से आगे की तरफ आ रही है. इट इज द पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी एंड yeah, it is the posterior interosseous artery, and one artery which is traveling, it is traveling like above the interosseous membrane. interosseous membrane के ऊपर से जा रही है. Okay, it is just and this artery through this particular hole will go behind. Through this particular hole will go behind. And remember that this artery is basically the anterior interosseous artery. Anterior interosseous artery. Yes, this artery will be the anterior interosseous artery. I hope the things are clear to each and everyone, guys. The things are clear to each and everyone. Yes, the things are clear to each and everyone. Just give me a thumbs up, guys, that you all understood it, so that I can like tell you one more important thing. Yes. चलो, परफेक्ट परफेक्ट गाइस, परफेक्ट परफेक्ट. चलो, एक और चीज हमें मेंशन करनी है, एक और चीज हमें मेंशन करनी है. यस प्रीक्षित, वेरी गुड प्रीक्षित. एक और चीज जो मुझे मेंशन करनी है, दैट इज द लास्ट स्ट्रक्चर. इट इज द आर्टिकुलर डिस्क ऑफ रेडियो अल्नार जॉइंट. आर्टिकुलर डिस्क ऑफ रेडियो अल्नार जॉइंट, और जस्ट सिंपली आई एम राइटिंग इट ओवर हियर ओनली. यस, प्रीक्षित, करणवीर, फातिमा, उमी,
Umi, okay, a new student. Vipin, okay. Articular, yeah, write down articular disc of inferior radio ulnar joint. RU joint लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे, I don't have space. Articular disc of inferior radio ulnar joint. अरविंद, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट. बाकी तो वो रिप्लाई भी नहीं करते. अभी अपने चाहने वालों को रिप्लाई करना हो तो ऐसे ही बिल्कुल फटाफट फटाफट ऐसे हाथ चलते हैं तुम्हारे, और हाथ नहीं चलेंगे तो मन में तो ऐसा लगेगा कि कब आगे से रिप्लाई आएगा, और एक बार रिप्लाई आने के बाद तुम 10 मैसेज करोगे लगातार, जैसे तो पता नहीं क्या ही मिल जाएगा तुम्हें. उमेर, उमेर, ओके, उमेर, ओके, उमेर, ओके. So write down its base is attached to inferior border of ulnar notch of radius, ulnar notch of radius, and over here just write down its apex is attached to the depression at base of styloid process. Yes, so this was around this was about the structures that are connecting the radius and the ulna. These are connecting the radius and the ulna. Okay, so I hope the things are very much clear to each and everyone. So yes, we have now, I'll just summarize it up. We have already discussed the type, the location done, site determination is left. Okay, site determination, I'll just mention 2-3 points so that you can, yeah, I'll just mention 2-3 points so that the notes get completed. So remember that how to determine whether it is right or whether it is left. These are by certain points, guys. Remember that the upper end is large and hook like. You already know it is the trochlear notch. It is the trochlear notch that has already been discussed. The lower end is small. The lower end is small, and it carries head and styloid process. It carries head and styloid process. Okay. The lateral border, or simply the interosseous border, it is sharp. It is sharp, and the concavity of the trochlear notch, जो hook shape structure है वो आगे की तरफ है. Okay, it's just in front. The concavity of the trochlear notch, is directed forwards. So yes, this was about the side determination done. Parts done, lower end, shaft, upper end already done. Muscle attachments done. Origin and insertion, homework already I have discussed. Ossification centers done. Structures related to radius and ulna done. All the points are covered. Clinical anatomy with the radius bone. When I will complete the radius, then I will discuss the fractures which are common to both the bones. Okay, how they are related to each other, that I'll discuss after radius, that is tomorrow. So I hope everyone is like perfectly fine. Okay, कल मॉर्निंग में क्लास रख लूँ क्या? चलो, नहीं, इतना नहीं सर, इतना तो आप ज़्यादा हेडेक हो जाएगा. नहीं, चलो, आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन गाइस. प्लीज़ फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड्स को यार. आई एम लाइक मोर ऑफ I'm doing such a hard work, so just forward it, share it,
तो जितने पोस्ट शेयर करते हो, मेम्स शेयर करते हो ना, उतने ही मेरी वीडियोस भी शेयर कर दिया करो। ओके चलो, नहीं यार मॉर्निंग में नहीं रखूँगा, टेंशन मत लो अरबाज यार, इवनिंग में ही पढ़ेंगे ना, कुछ चीज़ों का मज़ा तो रात को ही आता है। हाँ हाँ चलो, क्लास है मॉर्निंग, ठीक है भैया। हाँ, पढ़ने का मज़ा तो रात को ही आएगा ना। चलो परफेक्ट, चलो चलो परफेक्ट बेटा, गुड बाय। Arvind is laughing. चलो ओके। इंटरऑशियस बेटा, उमेर उमेर बेटा, इंटरऑशियस मेम्ब्रेन इज बेसिकली द मेम्ब्रेन। देखो इंटर और ऑशियस, इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, और ऑशियस मीन्स बोन। तो दो बोन के बीच में एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, दैट इज द इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। और मोस्ट प्रोमिनेंटली इट इज बिटवीन द लाइक जो हमारी अल्ना और रेडियस बोन है, ठीक है। अल्ना का लेटरल बॉर्डर और क्या कहते हैं रेडियस का मीडियल बॉर्डर। ओके, हम लोग इसको कॉमनली इंटरऑशियस बॉर्डर्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ये मेम्ब्रेन ऑरिजिनेट करती है, एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच कनेक्ट दीज टू बोन्स। ओके सो यस yes yes, I hope Umair it's clear to you now beta. Okay chal, perfect beta, goodbye.